we all know. So today is Allurion balloon, common dietary problems after Allurion balloon, which some of you must be facing or some of you will face in the future. Okay, so I think pre-op instructions are very important. I am repeating them again. Stop. मैंने एलुरिन बैलून डलवाने का अपना मन बना लिया है। अब मैं अपने आप को कैसे प्रिपेयर करूँ? देखिए, जब भी आप मन बना लेते हैं, पहले आप एंटासिड या ऑसिड की गोली खाना शुरू कर दें ऑन डेली बेसिस, ब्रेकफास्ट से पहले। सेकेंडली, बाहर का खाना, अल्कोहल और स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि इनसे एसिडिटी बनती है और बैलून डालने के बाद थोड़ा सा कोलिक्स आपको हो सकते हैं, तो वो अवॉइड करें। 2 से 3 दिन पहले अपने आप को अच्छी तरह से हाइड्रेट करें, 2.5 से 3 लीटर पानी पिएं। प्रोसीजर से 1 दिन पहले आप रात को 12 बजे के बाद कुछ ना खाएं, खाली पेट आपने प्रोसीजर कराना है। प्रोसीजर से 1 घंटा पहले 3 टैबलेट्स होती हैं जो आपने लेनी है, पेंटॉप 40 mg, एमसेट 8 mg और एप्रिपिटेन 125 मिलीग्राम। आप हमारे कोऑर्डिनेटर नूर से बात करके मेडिसिन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप कोई पहले मेडिसिन लेते थे, शुगर की, बीबी की या थायराइड की, तो केस टू केस बेसिस पे हमसे पूछ लें कि कौन सी मेडिसिन लेनी है। थायराइड की मेडिसिन तो लेनी होगी, शुगर और बीपी की शायद मेडिसिन आपको मना करेंगे लेने से पहले। ये प्रिपरेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेंटली प्रिपेयर करें कि मुझे हेल्दी होना है, मेरा टारगेट ये है और मुझे इसको अचीव करना है, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। थैंक यू। So three basic things: hydration, stop outside food, stop alcohol smoking. So ये medicines on the day of procedure: Pantop, Emset and Epipitant. Okay. So everybody knows how the procedure is done. Just a quick capsule is swallowed with a cup of water. It takes 5 seconds. Then after that we do an X-ray to check the position of the capsule. Then this is filled with the filler liquid which comes along with the kit, and the capsule becomes a balloon. It takes, I think, 3 to 5 minutes. Next step is again an X-ray to see this balloon. Recently, one patient did an ultrasound and she said, I have a gas in the stomach. The gas is in the balloon. Small gas is in the balloon, which is normal. Then removing the thread, which takes another 10 seconds. So the whole total procedure time is 5 to 10 minutes, including 2 X-rays. Okay. So these are some of our patients who have done very well. I think Murshida is taking care of him, and he has Yes, lost sir. 19. Today is 111. He has lost 19 kgs, and it is 1.5 months. That he's doing an excellent job. So three phases of diet: clear liquid diet, which lasts for 2 weeks; soft diet will last for next 15 days; and normal diet after the 1 month till the balloon lasts, which is 4 months. You have to remember balloon size is 550 ml. It occupies half to one third of the stomach, gives feeling of fullness. That is why patients don't do binge eating. Nausea and cramps are common for 1 or 2 days. Patient may not drink even water for initially one day. So hydration before the balloon is very important. Otherwise, they will have headache and sleepiness. Counseling is very important. Lie on the left side. That will give relief of cramps. Lie with head up and massage from left lower chest to the umbilicus. That is also very important so that the balloon gets adjusted. Rare cases may need hydration at hospital who have not hydrated themselves before, and they have to take all the medicines we prescribe like antiemetics, Mantop, and Aprepitant for next 3 days, and an antispasmodic medicine like Drotin. If they are using a BiPAP machine before, they should use it with the balloon as well. They have to monitor their BP, sugar, and SpO2 if they are diabetic and hypertensive. Otherwise, no problem. Feeling tired, can use ORS in 1 liter of normal water, not cold, and can sip throughout the day. My take home for first 2 days is ORS and coconut water, and that is the first 2 days patient wants to take out the balloon. Recently, one of our patients got the balloon out. She's a doctor herself, and I think she got afraid. Maybe she was not mentally prepared, so that is very important. Patient, we have to be very patient with them. If there is a lot of pain, you should immediately report us, and we have to check why there is a lot of pain. And remember, there are no hormone changes in the balloon like bariatric surgery. So my take home for first 15 days is these three: coconut water, beetroot juice, and a buttermilk. These three are my take home. Other juices you can add according to the patient choice, and a whey protein. Okay. And after 15 days, you can start the homemade protein. So this is whey protein, coconut water, vegetable juice. These are the three takeaways for first 10 to 15 days, making it very easy for you. Protein shake, which is whey protein simple, coconut water, and a vegetable juice. After 15 days, you can go for smoothies, which are a little bit thick. I think this we all know.
Do not use a straw. No packaged fruit juices. If they are taking vegetable juice, it should be prepared at home. And drink slowly, and no sugar to be added in anything, no stevia and all. For next 15 days, I think smoothie and buttermilk. These are the two things. You can add buttermilk even after 1 week, and homemade protein shake at that time. So homemade protein shake twice, and in between they can take smoothie or little bit of khichdi or that kind of a thing. So I'm making it very easy for you to advise your patients. Very important, don't give them a weekly chart in even in the first week, otherwise they will not follow. They have already followed, I think, 8 to 10 dietitians before they have planned for a balloon or a surgery. Please follow them daily, use the WhatsApp group. You motivate them to exercise. Once they are on track, then you can go for a weekly diet, maybe up 2 weeks, maybe at 1 month. But initially don't do like that, otherwise the patient will lag behind. Once the patient lags behind, it's very tough to catch up. So these are the instructions. Homemade protein and 40 minutes exercise are the two takeaways which are very important. So in stage 3 normal diet, healthy negative energy balanced diet, as we have discussed in our previous classes, focus on right snacks and focus on right drinks. No outside drinks. Drinks again, coconut water, buttermilk, smoothies, homemade protein shakes. Right snacks is that can be dry fruits, popcorns, and obviously chana. Last time we discussed about smoking, so I planned this slide for you. This is a ideal slide for a person who smokes. Just see if there is anything which is good or which is healthy. Just see this. It has toilet cleaner ammonia. So anybody would like to use toilet cleaner close to their mouth? It also produces methane, which is sewer gas, which is produced in the sewer. Poison is arsenic is poison. Then methanol is a rocket fuel, and candle wax is stearic acid is in the smoke. Butane is a lighter fluid. Nicotine is an insecticide, which is the addictive part in the smoke, and cadmium, which is used in the batteries. So just imagine in a paint, again it gets addicted. So smoking is, these are the things which are there in a single smoke. So imagine people who are smoking, what they are doing. They are basically using toilet cleaner and sewer gas. So first, most common symptom after balloon is nausea and vomiting. Three takeaways: lie on the left side. Do not go to sleep right after dinner. Don't talk during meals, otherwise they will ingest the gas. And it is normal for 48 to 72 hours. These three things are important. And it is normal for 48 hours. Again, revision: lie on the left side, mobilize, eat smaller portion if you are in whole full meal, or in liquid diet only 30 to 50 ml per hour. In first day, if you are not drinking anything and you are hydrated, it should be normal. In phase 3, no drinking mid-meal. Now, another thing is how to differentiate hunger cramps from intolerance cramps. So, only thing is nausea. If there is nausea, that means patient has intolerant cramps. If there is no nausea and patient has cramps, that means it is hunger cramp. Generally happens at the end of 1 week, can happen earlier as well. So the only differentiating feature between the two is nausea. That means you have to increase the diet. In abdominal cramps, you have to restrict the diet, but in hunger cramps, you have to increase the diet. If the patient is 1 week or 10 days or 14, that means they are not taking adequate protein. Check with them. If they are taking adequate protein, you can move to the next phase, that is the soft diet at the end of 2 weeks. So rest on the left side, and sometimes for abdominal discomfort, they can use a hot water bottle. Apply it. It gives a kind of a relief. This important thing also you can use when the patient has cramps. Second point is hydration. Generally, we require 2 to 2.7 liters or 6 to 8 cups. And if there is not adequate hydration, these are the two important symptoms: headache and sleepiness. So you will see the patient is sleeping after the balloon, or they are having headache. That means they have not pre-hydrated themselves well. But if they have very dry or sticky mouth and no urine output, and the headache is increasing, ask them to contact us because they may need IV hydration. So ask them to drink. Don't wait till they are thirsty. Keep on sipping. And don't use ice cold beverages because they may worsen cramps. Sometimes I used to give them ice cubes,
Now I've realized it increases the cramp, so no ice cubes. Home, it is should the liquid should be at home temperature or like little bit lukewarm. Hydration, avoid ice cold liquids. 7. Divide in three parts once they are at phase 2 diet. 700 ml morning, 700 ml afternoon, 700 ml night. Over 4 hours, you can give them. If they are feeling weak, again, ORS in 1 liter of water is very important. And don't wait to be thirsty. Still, if they are having no urine output, if they are having a lot of dryness, then they may require IV hydration. Ask them to call us. We will give them some fluids. They will be fine. Constipation, a lot of people after bariatric surgery and balloon say we are constipated. Just remember, after bariatric surgery or balloon, because patient are on liquid diet, they will only pass motions twice a week. That is normal. And if the patient is feeling no, I want to pass stools, you can add syrup loose 10 to 15 ml before sleep and increase liquid diet, because unless they are not increasing liquid diet, they will feel constipated. So I have already told you what to do. In phase 2 and phase 3, you can add some this vegetables which should be peeled and all the seeds should be removed. Diarrhea. Again, some people say I have diarrhea with balloon. It is very uncommon. But if the diarrhea is there, just remember that you can add Econom sachet twice daily for 3 days. It is a probiotic. Again, ORS in 1 liter of water and stop protein shake. These three things you can do. Once patient is normal, then you can restart the protein shake, different brand or a different type of protein. If the patient is having intolerant to whey protein, give them homemade protein. Patient is intolerant to homemade protein, give them whey protein. I think these two are easily digested. Or restrict those cheese or milk products. Maybe some patients are lactose intolerant. That is why you have to talk to them and understand. Heartburn and acid reflux is very uncommon unless patient is smoking. If the patient starts smoking after the balloon, I always tell them no smoking, or they have a habit of taking a lot of chocolates or carbonated drinks. That is the time they are having heartburn. And especially before eating, smoking is there, they will have heartburn a lot. So counsel them to stop smoking. That is the crunch point to prevent heartburn and acid reflux. I think Murshid has faced one patient because of heartburn and acid reflux. She removed a balloon after 2 months. Bloating is very uncommon with the balloon. And if there is bloating, understand, are they eating very fast, or they are basically taking a lot of gap and then just gulping the fluid. It has to be continuous over the day. Formation of gas is again very uncommon after balloon unless patient is chewing gum, using chewing gum, because they can swallow the gas, or that time they are talking while eating, again they will swallow the gas, or they are using a lot of carbonated drinks. These three things are not there. There will be no wind. लोग कहते हैं ना पेट में हवा घूम रही है. That means check for these three things. Bad breath is very uncommon after Allurion balloon. In endoscopic balloon, the material used was silicone, but in Allurion balloon, it is polyurethane. It is transparent. It doesn't have any sticky surface. So with endoscopic balloons like silicone balloons, food used to stuck over the balloon and patient used to have bad breath. But with polyurethane, there is no bad breath. Okay. And if still the patient has bad breath, they can use a peppermint or a mint of water, mint in a glass of water, that can give them a good breath. So this is our presentation for today. I think you must have learned a lot of very practical tips. Before we go for questions, I think who is ready to present their slide? Tejaswani or Yusra? Who is present? Who is ready to present their slide? Okay, sir, I'll go first. Who will go first? Tejaswini. Okay, go ahead. So, hello everyone. I'm Tejaswini here, and for topic for our presentation is today is DASH diet. So, why did I actually choose a DASH diet? As doctor has said to us, like we have to search for a good, best diet, like that will work for weight loss, and our niche is here, to help obese people and overweight people uh, for losing weight. So when it comes to dash diet or when it comes to obese, there are a very few people who are just obese or overweight, or the most common patient found that either they have a simultaneously hypertension or a diabetic, right?
So for those patient, I don't think like keto diet or intermittent fasting, this kind of a diet will work. So here is a DASH diet. My PPT is including what is exactly DASH diet is, how it works, some dietary guidelines, or some tips from according to me, like dietitians should consider. So what exactly DASH diet is? It is a dietary approach to stop hypertension. Diet is an eating plant-based or eating plenty of fresh fruits and vegetables, choosing lean meats, low-fat dairy, beans, nuts, vegetables, oils, while limiting sweet foods high in saturated fat. राइट सो एक तो हमें यहाँ पे हाइपरटेंशन को स्टॉप करने वाला डाइट देना है, बेसिकली ये बात है. आप लोगों ने अभी हाल ही में एक आर्टिकल छपा था अबाउट डायबिटीज 2, राइट? उसमें लिखा था कि इट कैन नॉट बी रिवर्सिबल, हम पेशेंट को सीधा नॉर्मल नहीं कर सकते, बट इट कैन बी कंट्रोल. हमें वही करना है यहाँ पे डैश डाइट देख के, कि हाइपरटेंशन के जो पेशेंट है उनके जो सिम्टम्स है उनको डिक्रीज करना है, और इट विल वर्क फॉर अ डायबिटिक पेशेंट ऑल्सो, कि हमें सम चेंजेस करने पड़ेंगे उसमें, बट इट विल वर्क बेटर क्योंकि इट इज हाई इन फाइबर, फ्रूट्स ज़्यादा है, वेजिटेबल्स ज़्यादा है, प्रोटीन अच्छी मात्रा में, और कार्ब्स भी इट इज स्टेबल. सो अभी आई हैवंट फाउंड अ सिमिलर डाटा अबाउट इंडिया, बट ये अमेरिका से रिलेटेड है, कि इसमें लिखा गया है कि उन लोगों ने एक स्टडी पब्लिश की थी, उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था कि 75 से जो कम एज वाले मेंस एंड वुमेन्स है, दोज हु आर गोइंग थ्रू अ हाइपरटेंशन, उन लोगों ने, कुछ लोगों ने डैश डॉलर फॉलो किया था कुछ मंथ्स के लिए, और कुछ लोगों ने नहीं किया था. दोज पीपल हु हैव फॉलोड डैश डाइट, उनमें सिम्टम्स जो है वो कम दिखने लगे, और दे वर गेटिंग नॉर्मल. और जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया था, उनकी कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स्ट हो गई. दे हैव बीन थ्रू अ हार्ट स्ट्रोक, कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस, किडनी, और कुछ लोगों की डेथ भी हो गई आफ्टर some 5 or 6 years. So what DASH diet is actually do, it reduce blood pressure in adults with the borderline high blood pressure, low sodium modification to the DASH diet. अगर hypertension स्टेज 2 है, 1 भी है, हमें सोडियम का कंटेंट कम ही रखना पड़ेगा. व्हेन इट कम्स टू अमेरिका, लाइक वी नो दैट दे ईट लॉट ऑफ मैकडी फ्राइज एंड बर्गर्स, तो उनमें सोडियम का जो कंटेंट होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है. सो यूजुअली those people have sodium around 3500 mg per day, बट हमें अगर हाइपरटेंशन का मरीज है, हमें सोडियम रेस्ट्रिक्ट करना ही पड़ेगा, और 1500 mg पर डे या उससे भी कम देना पड़ेगा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So what it includes, okay, so what it exactly includes, so our main food group is here fruits and vegetable, um, which is rich in fiber, antioxidants, vitamins. So start loading up on fruits and vegetable with your first meal of a day. When it comes to Indian household, I don't. We usually what we do is we usually have a habit of skipping a breakfast. I think as a dietitian we should tell a patient like अगर आपको चीजें खानी है तो start load up in the morning or have it till afternoon, और उसके बाद भी आप स्नैक्स और डिनर ले सकते हैं, और डिनर भी हमको यू you नो know, थोड़ा अर्ली ही लेना है. और देन ऑल्सो फॉर ब्रेकफास्ट वी कैन हैव ऑमलेट, एग वाइट्स लेके, और उसमें हम वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं. अलोंग विद दैट वी कैन हैव अ स्मूदी, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, बनाना, वी कैन फ्रोज द फ्रूट्स, so we can have a good consistency for the smoothie. Again for lunch we can have a salad. Okay, get back to a slide please sir. Again for a lunch we can have a salads using fruits and vegetable, और along with that हम protein ले सकते हैं, beans, tuna, chicken, tofu, nuts and seeds. सैलेड में हम यूज कर सकते हैं. अगेन फॉर डिनर
हम स्टर फ्राई कर सकते हैं यूजिंग ऑलिव ऑयल और पीनट ऑयल. आई थिंक ऑलिव ऑयल इज मोर suitable for European culture. In India, we should replace that with peanut or a sesame oil. रिफाइंड ऑयल को स्टॉप ही करना है हमें, उनको बताना है कि लेना स्टॉप ही करें. Again, you can have fish at a night. Salmons, mackerels, these are good for protein rich and omega-3 fatty acids. So, get back to next slide. Okay. डेयरी एंड होल ग्रेन्स. डेयरी ऐड कर रहे हैं तो हमें लो फैट डेयरी इंक्लूड करना है. सो मिल्क में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ जाएंगे. योगर्ट्स लो फैट योगर्ट ऐड करना है. मिल्क अगर हम ले रहे हैं, यू कैन ऐड सोया मिल्क, बट वी कैन ऑल्सो, अगर पेशेंट हैबिचुअली लाइक बफेलो और काउ मिल्क से, हमें उनको काउ मिल्क सजेस्ट करना है. इट इज़ हाई इन प्रोटीन एंड लेस इन फैट. अगेन सोया मिल्क, आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क हम करीज में यूज कर सकते हैं. लाइक वी कैन मेक इट एट होम ऑल्सो. हम उसको पील कर सकते हैं, ग्राइंडर में डाल सकते हैं, पानी डाल के मेक इट एट होम. आलमंड्स में हम सोक करके वी कैन मेक इट एट होम. अगर अगर हम चीज ले रहे हैं तो लो फैट चीज ही लेना है. और I think when some of the cheese have get processed, उनमें सोडियम का कंटेंट होता है, तो हमें वो नहीं सजेस्ट करना है. अगर आपको, या फिर अगेन यू हैव अ हैबिट ऑफ मेकिंग अ गुड फूड एट होम. हम चीज भी घर पे ही बना सकते हैं विदाउट एडिंग एनी प्रोसेस्ड ऑप्शंस, राइट. हेल्दी फैट्स में हमें ऑलिव ऑयल, अगेन मैंने कहा कि पीनट्स और सेसमे ऑयल से रिप्लेस कर सकते हैं. फॉर हेल्दी फैट्स, आई थिंक एवोकाडो इज द बेस्ट फ्रूट्स. If you are getting really good avocados, you can have it with eggs, और some scrambled egg उसमें मैश करके एवोकाडो यू कैन हैव ऑन अ टोस्ट. और या फिर आप कैशू फ्रूट ले सकते हो और जस्ट टेक कैशू एज ए नट्स. नट्स, लेग्यूम्स एंड सीड्स. अगेन नट्स एंड सीड्स हमको लेने ही है. दैट इज रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड. ओमेगा 3 इट्स एक्ट एज अ वैसोडाइलेटर. हमें हाइपरटेंशन के लिए उसको यहाँ पे कंसिडर करना है. सो यू कैन हैव अ ओट मील, उस पर हम फ्लैक्स सीड्स वगैरह स्प्रिंकल कर सकते हैं. चिया सीड्स हम इंक्लूड कर सकते हैं पानी में. अगेन यहाँ पे सम वेजिटेरियन चिली का मैंने ऑप्शन दिया है, अगर आप बीन्स ले रहे हैं, या फिर वी कैन हैव राजमा, राइट. अदर chickpea salad that is very on a trend right now. For fish, poultry and lean meats, we have to control हाई फैट रेड मीट. हम पेशेंट को नहीं सजेस्ट कर सकते लाइक मटन. वी कैन नॉट सजेस्ट देम अ मटन. अगर चिकन आप ले रहे हैं तो हैव अ चिकन ब्रेस्ट. 100 ग्राम चिकन इज गुड. फिश में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आ सकती है. सालमन्स इज गुड. मैक्रेल, रोहू, कतला, दैट इज वेरी गुड इन प्रोटीन, एंड उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी अच्छा होता है. व्हेन इट कम्स टू कुकिंग ना, वी ऑल्सो हैव टू कंसिडर फॉर अ कुकिंग, लाइक हमें लाइक डीप फ्राई करने की आदत होती है. फिश अगर हम ले रहे हैं तो हमें वहाँ पे शैलो फ्राई करना है या फिर स्टीम करना है. सो यू कैन गेट दैट ओमेगा 3 फैटी एसिड वाला कंटेंट इन योर डाइट. और हैव विद सम वेजीज ऑल्सो, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है. ओके. So why does DASH diet work? Here it is low in saturated fat and dietary cholesterol, low in sodium. It is rich in potassium, magnesium, calcium, protein and fiber. हमें यहाँ पे एक भी कंसिडर करना है कि हमें पोटेशियम अच्छे मात्रा में दे सकते हैं हम, और हमें सोडियम का रेस्ट्रिक्शन करना है. एम्फसाइज फ्रूट्स, वेजिटेबल, लो फैट डेयरी, इंक्लूड होल ग्रेन्स, फिश, पोल्ट्री, नट्स. Limited red meat, sweets, sugary, and beverages.
For salt constriction, there are some tips. Processed food, natural fruit should be chosen instead of processed food. Recipe should be prepared from scratch. जो भी है घर पे ही बनाना है from scratch से लेके canned fruit sorry canned foods हमें include नहीं करना है. Some of we buy like canned beans या फिर some processed fruits. तो वी शुडंट इंक्लूड दैट. साल्ट इन कुकिंग और एट द टेबल, हमें आदत होती है कि डाइनिंग टेबल पे हम साल्ट की बोतल रख देते हैं, जिनको लगेगा वो लोग लगे. बट एज अ फॉर पेशेंट वी शुड टेल देम टू स्टॉप दैट हैबिट so they can stop it. अजीनोमोटो एंड बेकिंग पाउडर, अगेन इनमें सोडियम का कंटेंट होता है. Salt preserved fruits like pickles, no. Instead of them, like we can make fresh chutney, pudina chutney, tomato chutney. So they can have a little taste in their diet also. Highly salted foods such as potato chips, papad, ketchup, soya sauce, nahi. Cheese, peanut butter, salted butter, no. Dry fish, okay. Dry fish, some of हमें नहीं है बताना है क्योंकि उनमें सोडियम का कंटेंट. यू कैन हैव अ फ्रेश पीस और सी फूड ले सकते हो आप अच्छी मात्रा में, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगेन प्रोसेस फूड्स नहीं लेने हैं हमको. नेक्स्ट टू some dietary consideration as a dietitian. ये कुछ मैंने टिप्स बताए. ओमेगा 3, again it act as a vasodilator. Those are PUFA, which include DHA and EPA. They act as a vasodilator, so we can include variety of fish in your diet, or nuts, oil seeds, and all variety of seeds also. Nitrates for hypertension. Again, we can include nitrate in your diet. अगर hypertension के मरीज हो तो it also act as a vasodilator. But for when it comes to diabetes ना, uh, I am not really sure कि उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. Uh, 30 minute exercise daily, it can be habitual. अगर वॉक करने की आदत है उनको बताना है कि वॉक करना है, साइकिलिंग पे जाना है, यू कैन डू अ साइकिल. अगर आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है यू कैन डू दैट. जंपिंग, स्किपिंग ऑल्सो इज बेटर ऑप्शन. ऐसे नहीं कि स्टिक टू अ वन थिंग लाइक go to a gym or do a yoga. You can do anything just for 30 minutes or 45 minutes. Food measurement, spoons and electric wave. So what patient actually do is like we tell them to take a teaspoon or a tablespoon of oil. So those don't really measure and include the amount they consider just by themselves. So we have to tell them कि the वो spoons होते एक साथ मिलते हैं वो measurable. So we have to tell them to buy them. और electric वे अगर अगर ये अच्छा रहता है घर में तो मेजर करने के लिए अच्छा हो जाता है. 100 ग्राम का 100 ग्राम, 30 ग्राम का 30 ग्राम. तो एज अ डाइटिशियन वी शुड टेल देम. अगेन पोटेशियम, टेंडर कोकोनट में होता है, सोडियम का कंटेंट लो होता है, पोटेशियम का ज्यादा होता है. सो वी कैन सजेस्ट देम एवोकाडोस, ऑल फ्रूट्स, वेजी, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो. अगेन आई हैवंट mentioned the banana. A banana is also rich in potassium, so we should include that. That's it. I think a great presentation. We should clap for her and we should come for discussion now. So, Yusra, are you ready or your connection is still an issue? Yes, sir, I'm ready. I've connected with some other device. Okay, so I think you should finish it fast and then we will go for a final discussion. Okay, go ahead. So the topic for my presentation is high carb and low carb. सो बेसिकली हम इस पे डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली हम जो हाई कार्ब एंड लो कार्ब देते हैं वो इसलिए देते हैं जब पेशेंट का जो है वेट स्टक हो जाता है, या फिर अगर हम देखते हैं कि उसका वेट बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, अगर वो सही से प्रॉपरली डाइट फॉलो कर रहा है तब भी नहीं जा रहा. तो बेसिकली हाई कार्ब ये होता है कि हमें 45 to 60% जो है टोटल डेली कार्ब्स देने होते हैं, हमको कैलोरीज जो है कार्ब्स के थ्रू देनी होती है. और इसका कॉमन फूड है आपका होल ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, लेग्यूम एंड स्टार्ची फूड्स. कैन वी प्लीज शिफ्ट ऑन टू नेक्स्ट. ओके, सो लो कार्ब डाइट ये होती है कि टिपिकली लेस देन, इसमें कार्ब्स कम होते हैं लेकिन प्रोटीन ज्यादा होता है.
जिसमें हम ज़्यादातर मीट, फिश, एग्स, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स देते हैं लो कार्ब डाइट में जो है। सो जो बेनिफिट्स होता है हाई कार्ब का होता है, वो एक तो एनर्जी प्रोवाइड करती है फॉर फिजिकल एक्टिविटी, हाई एंड फाइबर होती है तो एड करती है डाइजेशन एंड सैटिस्फैक्शन में, और ब्रेन फंक्शनिंग को भी सपोर्ट करती है। सो लो कार्ब हमें क्या करती है, वो प्रमोट करती है वेट लॉस बाय रिड्यूसिंग एपेटाइट, और जो ब्लड शुगर लेवल्स है वो उसको कंट्रोल करती है, और इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी, और ये रिड्यूस भी करती है जो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स होते हैं ब्लड में, उसको भी रिड्यूस करती है लो कार्ब डाइट जो है। सो अब ड्रॉबैक्स क्या हैं हाई कार्ब डाइट के? पोटेंशियल होती है इसमें वेट गेन हो सकता है, क्योंकि हम कैलोरीज ज़्यादा करते कंज्यूम करते हैं, लेकिन इतना एक्सपेंडिचर नहीं करते इसमें जो है। और इसमें जो है ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हम इसमें बिल्कुल हाई कार्ब देते हैं डाइट में जो है, और ओवर कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस्ड कार्ब्स भी हम इनको प्रोवाइड करते हैं, तो हो सकता है कि ओवर कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस्ड कार्ब्स की वजह से वेट गेन हो सके। ओके, लो कार्ब्स का डाइट का ड्रॉबैक ये है, ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी क्रिएट कर देता है, जिसमें हमें अपने फैटी, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, ये सब कॉमन थोड़े इश्यूज हैं, ये आते हैं इस डाइट से जो है। और इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए ये डाइट हम नहीं दे सकते, फॉर अ शॉर्ट टर्म हम ये डाइट दे सकते हैं इसको जो है ना। सो तो एग्जांपल्स ऑफ हाई कार्ब फूड हो गया, होल ग्रेन से हम उनको ओट्स दे सकते हैं, ब्राउन राइस है, किनवा है, फ्रूट्स में हम बनाना है, एप्पल है, ऑरेंज है, वेजिटेबल्स में पोटैटो, कॉर्न, पीस, लेग्यूम्स में हम बीन्स, लेंटिल एंड चिकपीस दे सकते हैं। लो कार्ब में हमें सारा प्रोटीन सोर्स देना है, जैसे चिकन, बीफ, पोर्क, सैल्मन, टूना, श्रिम्प, एग्स, ब्रोकली, वेजिटेबल्स में हम ब्रोकली, स्पिनच, बेल पेपर्स दे सकते हैं, एंड नट्स में हम आलमंड्स, चिया सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स हम दे सकते हैं। अब हाई कार्ब डाइट का इम्पैक्ट क्या होता है हेल्थ हेल्थ पे जो है, ये होता है कि पॉजिटिव इफेक्ट हाई कार्ब का ये होता है, ये सपोर्ट करती है हाई एनर्जी नीड्स, और ये बेनिफिशियल होती है एथलीट्स के लिए। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी होता है कि जो ये रिस्क ऑफ डायबिटीज का रिस्क बढ़ा देती है, क्योंकि हम रिफाइंड कार्ब्स इस्तेमाल करते हैं। लो कार्ब का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये अफेक्ट करता है वेट लॉस में और इम्प्रूव करता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। एंड नेगेटिव इफेक्ट ये है कि इसका जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होता है, रिस्क होता है, वो उसको बढ़ा देती है, क्योंकि हम इसमें सैचुरेटेड फैट हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो अब हमें जो चूज द राइट डाइट हमें करना चाहिए, हमें इंडिविजुअल की हेल्थ गोल्स के हिसाब से, मेडिकल कंडीशन के हिसाब से, लाइफस्टाइल के हिसाब से उनको हमें डाइट प्रोवाइड करनी चाहिए। एंड कंसल्टिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हमें बिना उसकी मेडिकल कंडीशन हिस्ट्री जाने बिना हम ये कार्ब उसको नहीं दे सकते। क्या अगर वो डायबिटिक होगा तो हम उसको बिल्कुल भी नहीं दे सकते, हम उसको लो कार्ब हाई कार्ब, इसको सिर्फ हम जो लोग वेट लॉस या फैट लॉस के लिए होते हैं उस पर हम दे सकते हैं डाइट जो है। I think very good presentation. I think clapping for her. एंड आई थिंक जो दूसरा ने बताया है उसका मैं आपको करंट बता देता हूँ। बिफोर यू गो टू जिम, यूज अ हाई कार्बोहाइड्रेट मील लाइक अ बनाना, और आजकल कुछ लोग जो पोटैटो होता है, आलू और दही लेते हैं जस्ट बिफोर द जिम, और कुछ लोग बनाना लेते हैं जस्ट टू इंक्रीज द कार्बोहाइड्रेट लेवल, सो यू विल नॉट फील टायर्ड इन द जिम। अगर आप अच्छी बिफोर जिम हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेके नहीं जाएंगे तो थोड़े टाइम बाद ब्रेन को कीटोन्स चाहिए एनर्जी के लिए, वो उसको मिलेंगे नहीं, और या तो वो आपके प्रोटीन से कीटोन्स ले लेगा, अदरवाइज अदरवाइज आपको बाद में एकदम फटीक हो जाएगा आफ्टर 2 राउंड्स, तो आप एक्सरसाइज बंद कर देंगे। सेम हैपन्स ड्यूरिंग आपका जो आप कार्डियो करते हैं उसके लिए। आई थिंक वी आर ओपन फॉर डिस्कशन, एनीथिंग। यस, 3 to 4 डेट्स भी आप ले सकते हैं। कोई चीज़ जो आप जानना चाहते हैं रिगार्डिंग पोस्ट एल्यूरिन बैलून सिम्टम्स, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? और जो तेजस्विनी की प्रेजेंटेशन थी बहुत अच्छी थी, कि आप अपनी डाइट में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इंक्लूड करें, थोड़ा हाई पोटेशियम डाइट्स लें जिससे कि आप नाइट्रेट्स लें जिससे वेजोडाइलेटेशन हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लें उससे वेजोडाइलेटेशन लो, नट्स, ये सब चीज़ें आप रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं, 6 से 8 बादाम और 1 से 2 अखरोट, दे आर वेरी गुड इन द Hello. मॉर्निंग। यस, गो अहेड। Sir, did I did some mistake like for sodium content कि इतना होना चाहिए और इतना नहीं होना चाहिए? I mean the measurement कि मैंने बताया कि 1500 mg per day should we आप have? यू आर आस्किंग आफ्टर बैलून और यू आर आस्किंग इन जनरल? Yeah, like after the surgery and all.
See, after surgery or so, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आप अपना सोडियम रिस्ट्रिक्शन करो बहुत ज़्यादा। अगर आप हाइपरटेंसिव हो तो जैसे हम जनरली कहते हैं कि 1 to 2 टेबल स्पून इज इनफ। तो लोगों को आप थोड़ा सा टेस्ट दे दो नमक का। जनरली लोगों को ना सेंसरी चेंजेस आते हैं सर्जरी के बाद। तो उनको इतना मीठा अच्छा नहीं लगता, इतना खट्टा भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उनको पहले याद रहता है, देयर इज अ मेमोरी। दे वांट कि पहले हम इतना खाते थे अब खाना है। तो यू कैन जस्ट आस्क देम टू टेस्ट। अदरवाइज आई थिंक 2 to 3 teaspoons of sugar and 1 to 2 teaspoon of oil is what we allow them to do in a day, but they have to do activity as well। देसी घी अगर लेना है 1 से 2 चम्मच तो फिर 5 किलोमीटर चलना है तो ले लो, अदरवाइज नहीं। ये जनरल हमारी गाइडलाइन है। एनीथिंग एल्स? think कोई Yes, क्वेश्चन ही नहीं sir. सकता। यस, यस, go ahead। Shaista here. यस, Sir, after surgery, like when we get back to our normal diet after a month in Allurion thing, we give them usually 6 to 7 meals, right? From यस, mid morning and night. Is it important to have those meals even for normal diet, or we can reduce the meals? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। सो just imagine, why are we giving 5 to 6 meals? We want them to eat, don't allow them to eat a bulk meal, number one। We want them to take 6 to 8 meals and 1/3 or 1/2 of the old meals। अगर वो एक बारी में 3 रोटी या 4 रोटियां खाते थे तो एक मील में आप उनको एक ही रोटी दो। Okay, तो उनको दो yes. से तीन घंटे बाद फिर भूख लगेगी। देन यू कैन स्टार्ट दी अनदर डिफरेंट प्रोटीन सोर्स। एंड व्हाई आई एम सेइंग प्रोटीन सोर्स इज इंपॉर्टेंट। सी वो पेशेंट इज टेकिंग प्रोटीन, दे विल स्टार्ट बिल्डिंग देयर, दे विल स्टार्ट लूजिंग फैट, they will start building muscle mass, though they may not reduce weight a lot, but their metabolism will increase. More the muscle is there, more metabolism is there. Those patients who don't take protein at all after surgery or balloon, even if they lose weight, they are very tired, they are fatigued, they don't look like doing a lot of activity. If they take adequate protein, they do a lot of activity what they have not done ever in their life. See, I think the example of this Azaz Murshida is taking care of him. He's walking 10,000 steps daily. He was 130 kg, now he's 111. He's down 19 kgs. He's doing a fantastic job, and he's taking adequate protein. These two things, if patient starts taking, then it's very easy. Yes, any other question? And for Shaista, ask them to carry a whey protein sachet with him wherever he goes, and then he can just pour it in 200 ml of water and drink whenever Yeah. he is feeling thirsty, when he is feeling hungry, and if he doesn't have a good protein source there. So he will be full for 2 to 3 hours, and he will have enough protein as well. Okay. And also he can carry snacks with him like chana, like nuts. So if he's in the car and he feels like, so he has to basically prepare himself. No, Make he him, constantly is having ORS water and whey protein with him wherever he yes, very goes. important. So that is why now you have seen he's not tired. Yeah, yeah, Initially he he's was not. tired, and he must be feeling active now. Yeah, he doesn't even feel like eating much as before. Yes. See, everybody wants to lose weight. They need your support and they need constant counseling. Don't forget them for 4 days or 5 days. Then it's a waste. Yeah, Otherwise, the patient will start losing the track. So you have to do some 10 minutes a day is needed only. Just give them 10 minutes a day initially. After 1 month, they will understand everything. Then you can give them weekly diets. But you start giving weekly diets from first week, patient will not follow anything. And after 1 week, they will not lose weight and they will start blaming me or you. They will yeah. say surgery is a waste. They will say balloon is a waste. Nothing has happened. Why I'm not losing weight? So very important to just give 5 to 10 minutes. Use the WhatsApp group. So I think that will be beneficial for everyone. Everybody is learning. We are also learning from patients every day. Don't be afraid. If anything is there, we are there to support you. Yes. Anything Thank else? Yes, Murshida, go ahead. So is everything is fine with the diet and patients will please Your after voice two, is three, two, your voice is not clear. uh, Yes, please go ahead again. so I said, Hmm. if everything is fine Hmm. and patients still feels like
BP after 2 3 weeks of See, daily no, treatment. very Then good. I understand. He is lying to you. He is not taking protein. You are talking about Rajiv. I know him very well. He is having withdrawal symptoms of alcohol, number one, because before that he was drinking alcohol a lot. So now he is having withdrawal symptoms which may last for 2 to 4 weeks. Number two, he's lazy because he's not taking protein. If he's taking adequate protein, he will okay. not be lazy. So you talk to his जैसे wife, मैंने you will find out that he is lying. I know him very ये well. मैंने और एक्चुअली से मैंने उनकी वाइफ से ही बात की थी और कहा था कि इफ देयर समथिंग पे कुछ तो है जो गड़बड़ी हो रही है पढ़ाई के साथ. Mhm. So she was like, no, no, everything is fine. We're following No, exactly what he you're will he will always lie. He has a habit of lying. See, he all the patients you don't trust them what they say or even what they write. The symptoms will tell you the thing. If he's feeling tired, he's not taking protein. 100%. Then ask him how many sachets have you finished till now. Then you will know. If saying. 1 month में 30 Okay, sachets he has to finish. Has he finished 30 sachets? I don't think so. He has not bought a single protein. He has a pack of 2 kg of protein. Ask him if it is finished. It should have okay, finished by sir. now if both husband and wife are taking in 1 month. So you can calculate from that. That is how you can calculate. So he will say, नहीं मैडम अभी तो आधा डब्बा पड़ा हुआ है. So that means he is not taking protein. Force them to take homemade protein. It is very tasty. And it is because they will do an effort to make it, they will start taking it. See, I take homemade protein every day. I have stopped whey protein for last 2.5 months. And today I had a 1.5 hours of gym. Then before coming to the class, I had a 1 hour of badminton. And I'm not tired because of homemade protein. Just before the activity, take a homemade protein and take some carbohydrate source, high carbohydrate source so that the brain takes carbohydrate for energy and the protein is used by the muscle to build muscles. If they don't take carbohydrate and they take only protein, the brain will use that protein for convert it to sugar, then ketones and use the energy. So that protein will not be used to build muscles. Understood? It's a very important trip. Yes. Anything else? So anybody having diarrhea, give them Econom sachet, ORS, and stop the protein for 1 or 2 days, then restart. I think who will present next time and what they want to present? Please, we have very less time. I have to see a patient is waiting for me. Yes, who will present next time? Any volunteers? No volunteer. Tomorrow, Yes. No, no, next week, yeah, it next will be Monday. on. Next Monday we Okay, talk. so I'll be the one. I'll be the one. Which topic? That I'll share that. So just send us the topic. Anybody else? Can I repeat another one? I Yes, also. you can. Okay. Okay, I Topic. can do. I'll present something next week. I'll share the topic with you. Okay, sure. And are you all enjoying this sessions or no? Very much. We're learning so Yes, much. Whatever sir, I we have enjoyed shown it. you, this is the original pictures from Allurion balloon from US. This slides are original slides from the notebook of Allurion balloon from United States of America. All these slides I am able to manage it from the Allurion company to share with you, and then I have summarized it to make it easy. So this is the thing you will not find anywhere in the world, only for a few selected people, and now we are sharing it with you. Whenever we share you the presentation, just try to share with other people as well. Start sharing your knowledge with other people. Discuss with us, discuss all the issues you are having, and then one day you will become an excellent dietitian, which is your aim. Okay, all the best.